और व्हाट अबाउट आजकल सोशल मीडिया की वजह से हम सब आर्टिस्ट हो गए हैं. ऑल आई नीड इज अ कैमरा एंड पीछे मैं कह रहे हो कि ट्रैक लगा के आई कैन बिकम एन आर्टिस्ट. what do you think? Do you think that's a good thing for art, or do you think that's a bad thing for art? It's a good thing for yourself, I think, because art, singing है, for example, it gives you pleasure. एक ट्रैक लगा दे, गाना गाए, you really feel good about it. तीन दोस्त बैठे हो, कोई मजाक में कुछ गाने गा दिए, is excellent, I think, is very good. Karaoke tracks have opened up that thing for people, but what I see is that people who just put on a track and say, I'll do a professional concert, that's not right. That's bad for music. That's bad for audiences, because you're diluting the sanctity of music. That's what you're doing. तो आप घर में गाओ, दोस्तों के लिए गा लो. It's great because you feel so nice after singing a song. But then you do concerts. And प्रॉब्लम ये है कि दोस्तों को बुला लेते हैं, दोस्त बोलेंगे क्या बात है, क्या गाना गाया. But you listen to some of these recordings and you feel that now they're diluting the very sanctity of creativity. That shouldn't happen in any form of art. So you should be careful how far you want to go with your art, with the display of your art. I say, think about it. And of course, I hear and people send me recordings of people who have not learned music. And that's not good enough. Just because you can sing two or three songs on tracks, it does not mean that you're a singer, you're a musician. You got to learn stuff. It takes a long time. That's what I think. So you're a purist there. लेकिन एटलीस्ट सिडनी में हर हफ्ते एक शो हो रहा है, तो ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ टैलेंट हियर एंड you have also encouraged people, you have taught people, but do you think people are in a hurry to perform and very slow to learn? They are in a hurry to perform. That's the trend all over the world now. कि सीखने में ही बड़ा टाइम लगता है, परसिवियरेंस लगती है हर चीज़ में. तो वो थोड़ा सीख के बोलेंगे चलो अब शो ही कर देते हैं. तो you're right, people are in a hurry to sing on stage, which can be risky, I think, for the singer and the audience both. Yeah, but they're still filling up the auditoriums. Yeah, that's what I'm saying. So I understand, because I'm not much into this kind of stuff or in touch with people, but I understand that you get friends bolenge, let's go and support this person, and you get people to come and listen to you, and friends are not going to hurl abuses at you. However you sing, they'll always say, bada maza aa gaya show mein. That I think is a killer, actually. So when do you think a person is ready to sing on stage? ये तो There are three essential factors in singing. One is the sur, the melody of the tune, of getting your sur right in the voice. इसको बोलते हैं कि बेसुरा नहीं होना चाहिए, वो सुर में गाए. दूसरा ये है कि ताल में रिदम की नॉलेज हो. ये दो चीज़ें तो फंडामेंटल है. और थर्ड चीज़ जो है उसको, वो है इमोशंस. यू कैन बी एक्सेलेंट सुर ताल में, लेकिन आवाज़ में अगर इमोशंस नहीं है, द सॉन्ग जस्ट गोज फ्लैट. तो इन तीन चीज़ों की मास्टरी बहुत ज़रूरी है, एंड इट टेक्स टाइम. इमोशंस लाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू अंडरस्टैंड, रीड पोइट्री, अंडरस्टैंड लैंग्वेज. उस पोइट्री को पढ़ोगे, गाने का पढ़ के 20 बार पढ़ो, तब पता चलेगा कि क्या इमोशन है और गले से क्या चीज़ निकालनी है. इसमें भी टाइम लगता है ना थोड़ा. प्लस द सुर एंड द ताल, विच आर फंडामेंटल ऑफ म्यूजिक. कई लोग गाते हैं जिनके गले में सुर भी नहीं है, ताल का भी नॉलेज नहीं है, इधर उधर भटक जाते हैं थोड़ा. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. सीखना चाहिए, थोड़ी मेहनत भी चाहिए इसमें. यू नीड टू वर्क हार्ड, वेरी हार्ड एक्चुअली. तो obviously you have a lot of students, and उसमें से if somebody is in a hurry to get on stage, do you tell them कि भाई बेटा अभी रुक जा, या do you look the other way? What is your tactic? I've had students, look, I mean, whether I tell them or I don't, if they have in their mind कुछ सोच लिया कि मैंने स्टेज पे जाना है मुझे, तो आप उनको रोक नहीं पाओगे.
You or me, we cannot stop them. That feeling of what you are, what you really have within you, it comes from within. A teacher can only tell you so much, but then you have to realize that I need a little bit more work. थोड़ी और चलने पड़ेगी मुझे रास्ते पर, तभी बात बनेगी. तो मैंने ऐसे कही हैं कि I give them hints, but it's not. If they have decided they want to go and put their talents out on the stage, they will do it anyway, I think. लेकिन जो sensible होते हैं ना human being, उनको खुद को पता होता है कि अभी वक्त नहीं है. लेकिन कई सेंसिबल वाले तो अपने आप पे डाउट कर करके ही खत्म कर देते हैं अपने आप को. यू नो दे कुड बी गुड, बट वो अपने आप को डाउट कर करके ही दे डोंट गो. While at the other time there are people who are so audacious that 3 लोगों ने तालियां बजाई तो we start thinking कि हाँ भाई हम तो ग्रेट है, I can go on stage.